Question number 4 says a student cycles to school. The graph shows the stages A to G of a journey. ये एक student है that is riding a bicycle. Part A, Part B, C, D, E, F, and G. Describe the motion of the student during stages B and D. B and D. इन दिनों को हमने explain करना what was the motion of the student. So the motion of the student in part B and D हम कैसे now first of all look at this. It's a velocity time graph. तो velocity time graph में horizontal line क्या show करती है? Number 1, zero acceleration and constant velocity. Zero acceleration and constant velocity. कितनी constant velocity है उसकी? 5 meter per second at B, 5 meter per second at B, और D पे कितनी constant velocity है? It is at rest position at D. Why? क्योंकि उसकी zero है speed. तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया. अच्छा नहीं, B और D को अलग अलग करना था. Let me यहाँ पे at rest और यहाँ पे भी zero acceleration. तो B पे we have zero acceleration. अब दोनों में फर्क देखें. यहाँ पे भी acceleration zero है, D पे भी acceleration zero है, but velocity over here is constant. कितनी है? 5. It remains 5 for how many seconds? तकरीबन को 10 seconds तक वो 5 ही रहती है. I mean 4 seconds तक, तो 4 to 6 seconds it remains 5. Whereas acceleration is also 0 at D, but यहाँ पे velocity भी जो है वो 0 ही है because it is at rest position. हम इसको क्या कहते हैं? We call it rest position. State how the graph shows that acceleration for stage E is greater than acceleration for stage A. अब मैंने आपको बताया था, when we have a velocity time graph, there are two things to know: the area and the gradient. The area shows us the distance and the gradient shows us the acceleration. Gradient का क्या मतलब होता है? Gradient means slope. So the slope of the graph is actually representing acceleration. तो वो कह रहे हैं prove that at point E the acceleration is greater than point A where the acceleration is lower. How can we prove that from the graph? Look at the slope. कहाँ पे ज़्यादा slope है? Is the slope greater at E or is the slope greater at A? At point E, if you see, the slope is much higher. वहाँ पे ज़्यादा slope है. Look at this, how steep E is, whereas A is not that steep as E is. तो हम कहेंगे कि obviously यहाँ पे stage E पे जो acceleration is greater, stage A पे acceleration is lesser. क्यों? Because of the slope. हम यहाँ पे कहेंगे the slope or the gradient of the graph is steeper at E than at point A. तो ये आपके पास reason होगा. Calculate the distance that the student travels in the last 10 seconds of the journey. तो last 10 seconds of the journey पे क्या distance होगा? तो ये आपके पास कौन सा point है? This is 26, 27. ये 27 seconds हैं, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे 17 seconds आ जाएगा. Over here this would be your 17. तो ये आपके पास last होगा ना 10 seconds, 17 to 27, which means you would be including कौन सा area? This area would be calculated because this shows the last 10 seconds. So last 10 seconds and that is being represented by this area. तो हम उसका area under the graph निकाल लेते हैं. We first have a square. Rectangle को अगर हम divide कर लें, ठीक है, ये हम यहाँ पे एक लाइन लगा, रेक्टेंगल की बेस हो जाए 7, हाइट इज 7, तो ये हो जाएगा 7 into 7 प्लस द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस उसकी कितनी हो जाएगी 3 इंटू हाइट अगेन 7 है. ठीक है, दो बेसिस है ना, टोटल 10 सेकंड्स थे, 7 सेकंड्स इधर लगे, 3 सेकंड्स इधर लगे. कैन वी नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस? द डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 59.5 मीटर would be your correct answer. So the total distance traveled is 106.5 meter. Show that average speed of the journey is 4 meter per second. Average speed का क्या formula था? Total distance over total time. The total distance is 106.5 as given to us in the question.
टोटल टाइम आपके पास क्या है? व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी? 27 सेकंड्स लगे ना। ये लाइन कहाँ पे एंड हो रही? 27 सेकंड्स इज द टोटल टाइम फॉर द जर्नी। तो आपकी एवरेज स्पीड जो आ रही है वो है 3.94 मीटर per second, and we had to show that the average speed of the journey is around 4 meter per second. तो हमारा आंसर closer to 4 नहीं आ रहा, 3.94 can be rounded off to 4. So yes, we have proven this.